माइनस माइनस कैसे आएगा? 258 258.258. 258 it will be positive na? Yes. 258.15 Kelvin. Okay, all of you, this is clear. So I'll give you some degree Celsius में and you convert it into Kelvin. Yes, do it fast, all of you. You have four temperatures which you have to convert and मुझे साथ में आंसर्स देना, एक 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 नहीं, साथ में आंसर्स करो. मीन्स एक चारों का साथ में आंसर भेजो तो मुझे पता चलेगा किसने पूरा करेक्ट किया है, कितना करेक्ट किया है. एक एक भेजते हो तो मुझे समझ में नहीं आएगा किसको कितना करेक्ट आया. Yes, all of you just note down this. इसके कुछ एग्जांपल्स में देती हूँ यहाँ पे, सेम ही कर लो. 25 डिग्री सेल्सियस, 47 डिग्री सेल्सियस, 70 डिग्री सेल्सियस and minus 98 डिग्री सेल्सियस. Convert it into Fahrenheit, all of you. So for giving significant figures, we have to go through some rules. ठीक है? So first rule है, क्या है first rule देखो. All non-zero digits as well as all non-zero digits as well as zero between the non-zero digits are significant. Statement समझा सबको? All non-zero Yes, miss. digits as well as zeros between the non-zero digits are significant. ठीक है, जैसे अगर तुम्हारा नंबर है 6003, so this is non-zero number, this is non-zero number and this is zero. So ये significant होता है. Zero is significant if it is coming between non-zero digits. Clear all of you? तो significant figures कितने हैं यहाँ पे? 4 है. ओके, नेक्स्ट. सपोज तुम्हारा नंबर है 6.003, तो भी ये जीरो जो है इट इज सिग्निफिकेंट बिकॉज इट इज कमिंग बिटवीन टू नॉन जीरो डिजिट. सो देर आर 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स. नेक्स्ट है 60.03, still they are coming between non-zero digits, so they are significant. There are 4 significant figures. Okay, so all of you just उसको नोट डाउन करो, इसको नोट डाउन करो. चलो फास्ट, राइट डाउन द टॉपिक सिग्निफिकेंट फिगर, फर्स्ट रूल और उसके एग्जांपल्स. एक मिनट.
If it is done, then tell me. Done? Yes, Yes, all ma'am. of you, it's done. Okay. So let's move to next rule. So next rule क्या बता रहा है? 0 to the left of first non-zero digit in number are not significant. ठीक है, जो भी zeros लेफ्ट साइड में आते हैं नॉन जीरो डिजिट्स के, वो नंबर आर नॉट सिग्निफिकेंट. फॉर एग्जाम्पल, if your number is if your number is 0.0045, तो ये जो जीरोस है ये सिग्निफिकेंट नहीं है. तो तुम्हारा सिग्निफिकेंट फिगर क्या है? सिर्फ 4 and 5, दैट इज टू सिग्निफिकेंट फिगर्स. इफ इट इज 0.045, ये जो जीरोस है ये सिग्निफिकेंट नहीं है. ओनली दिस टू नंबर्स आर सिग्निफिकेंट, सो इट इज टू सिग्निफिकेंट फिगर. इफ इट इज 0.03, तो अगेन मिस, और अगर राइट पे है तो दिस इज, ये जीरो सिग्निफिकेंट नहीं है. दिस इज, देर इज ओनली वन सिग्निफिकेंट फिगर. दिस इज क्लियर ऑल ऑफ यू? यस ऑल ऑफ यू, दिस इज क्लियर? इसको नोट डाउन कर लो फटाफट. सेकेंड रूल. You will be also having this topic in physics. Done all of you? Yes, ma'am. Next rule. If number ends in 0 but these zeros are to the right of decimal point, then these zeros are significant. So लेफ्ट वाले जीरो सिग्निफिकेंट नहीं है, बट राइट वाले जो जीरोस है वो सिग्निफिकेंट है. फॉर एग्जाम्पल, इफ इट इज 2.600, so they are on right, so they are significant. So total significant figures कितने हैं? 4 है. Next, 100.0, there are 4 significant figures. So अभी यहाँ पे 0.200, so left वाला zero is not important, but right वाला zero is important, significant. So there are 3 significant figures. Now 10 point means there are 10 decimal है यहाँ पे. So there are 2 significant figures. 1, 2. Right side वाला 0 is important, left side वाला 0 is not important. ये left side वाला 0 is not important, right वाला 0 are important. So 3 significant figures. Okay, all of you, this is clear? Write down the Yes. third rule fast.
Yes, all of you, this is done. Next करें fourth rule. Fourth rule क्या है? Terminal zeros are not significant if there is no decimal. If there is no decimal, then right side के zeros are not significant. So you can see 100, but there is no decimal here. So these zeros are not significant. There will be only one significant figure. जैसे अभी हम लोग ने previous example देखा था 10 और decimal था, तो there was a 2 significant figures. So decimal point is necessary to have a significant figure. Without decimal point, zeros significant नहीं रहेंगे. See, this is 1000, 3 zeros है, but they are without decimal, so it has only one significant figure. 200, no decimal, so these zeros are not significant, only one significant figure. Okay, write down the fourth point. If anybody wants to ask anything, you can ask. Miss, एक मिनट लेरॉन, एक मिनट. okay. हाँ बोलो. अगर डेसिमल पॉइंट होता तो ये भी सिग्निफिकेंट होते ना जीरोस. हाँ, अगर ये ऐसा होता था, सपोज 100 point, so there will be 3 significant figure. अभी सपोज 1000 point होता था decimal, so 4 significant figure. 200 decimal point, so 3 significant figure. ऐसा होता था 20 point, तो भी 3 significant figures. Okay, 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 got it. it's done, all of you. Yes, miss. फिफ्थ रूल क्या है? नंबर रिप्रेजेंटेड बाय साइंटिफिक नोटेशन, the exponential numbers have no significance. For example, the number is 1.06 into 10 raised to 4. So ये जो 10 raised to 4 है, इसका कोई significance नहीं है. We just have to see this number. So 0 आ रहा है नॉन टू zeros के बीच में, तो ये there will be a 3 significant figure. Okay, then इसका भी कोई importance नहीं है. This will have 4 significant figures. Clear? This 0 is coming between non-zero digit, and ये तो 0 right में है, means वो भी significant रहेगा. Clear, all of you? So you can just note down this point fast. Okay. It's done, all of you? Miss, 1 Yes. minute.
It's done, Priyanshu? Yes, miss, done. Next, sixth rule. All non-zero digits are significant. So, जैसे 1.23 है. So, there are three significant figures. If it is 232.508, so all these figures are significant. So, there are six significant figures. Okay? You can note down this rule fast. Miss, Yes. miss, afterwards, can you show rule number 2 and 3? Yes. Last में बताती हूँ. Okay, miss. It's done, all of you. Yes, miss. Seventh and last rule. Counting the number of objects have infinite significant number. Okay? क्या है? Counting the numbers of object have infinite significant number. For example, if you are count two balls, so object को count कर रहा है ना, there are two balls, means it is giving a count of object, so it has infinite significant figure. 20 eggs, 20 क्या कर रहा है, eggs का count दे रहा है अपने को, so it has infinite significant figures. Okay, you can write down. So now I'll give you few examples to solve on significant figures.